Are you reminded of something? What? Nokia company. Nokia. One more thing. This was Nokia. You know, some decades before, it was Nokia. The leading brand, Nokia. This was our childhood. This was our youth. And we have shifted from Nokia to now smartphones, Samsung, Android phones, iPhones. And if you ask yourself, and if you just analyze what brought the downfall of Nokia, आपको यही समझ में आएगा नोकिया जब पीक पे था in 2008. In 2008, Nokia was in its peak, on its peak, its zenith, अपने उरूज पे था. And in 2008 only, they sold 450 million handsets. 450 million handsets, and it was the world's largest mobile phone manufacturer company, Nokia in 2008. लेकिन फिर इंट्रोड्यूस हो गए गूगल हो गया इंट्रोड्यूस एंड्रॉइड आईफोन हो गया एप्पल फोन हो गया इंट्रोड्यूस एंड दे शिफ्टेड फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर. लेकिन उस वक्त नोकिया तैयार नहीं था हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होने के लिए एंड दैट बिकेम द रीजन ऑफ इट्स डाउनफॉल. एंड द सीईओ ऑफ नोकिया इन 2011 he addressed a gathering when Nokia was acquired by Microsoft in 2011. और उसमें उसने एक जुमला कहा था वो हमारे लिए एक बड़ा लेसन है. इसने कहा था we didn't do anything wrong. हमने कोई गलती नहीं की थी. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Somehow we lost. It's a very painful words. That means इसका मतलब क्या है? उनका प्रोडक्ट बेस्ट था, कोई गलती नहीं की थी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन जब हालात चेंज हो रहे थे, वर्ल्ड चेंज हो रहा था, वो चेंज नहीं हुए. इसलिए इन 2011 और 2012 दे वेंट बैंकक्रप्ट और कंपनी का जवाल शुरू हो गया. हैव यू हर्ड अबाउट ब्लॉकबस्टर? Blockbuster rose in fame, in success in 1990s and early 2000, and it had 9,000 stores, physical stores. ये DVDs देते थे, कैसेट होते थे ना, कैसेट, ये DVDs देते थे वर्ल्ड वाइड, इनके स्टोर्स थे रेंट पे. और it had 65 million registered customers, 65 million registered customers, and it earned a revenue of 5.9 billion in 2004, 5.9 billion in 2004. And this Blockbuster, this company, it was outclassed by one more company, entertainment company, Netflix, that's in trend right now. It outclassed Blockbuster in 2013. अच्छा, in 2000 का जब साल था, Netflix ने ऑफर की थी इनको, क्या बोलते हैं इनको, ब्लॉकबस्टर कंपनी को, कि आप हमारी कंपनी को खरीद लें in just $50 million. उस वक्त they declined because they were rising. And लास्ट में नेटफ्लिक्स ने क्या चाल चली, उन्होंने क्या चेंज लाई, दे लॉन्च्ड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. पहले फिजिकल स्टोर्स होते थे, दे लॉन्च्ड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग टू रिप्लेस रेंटल बिजनेस. डीवीडीज वगैरह खत्म की उन्होंने चेंज लाई, उन्होंने अडेप्ट किया. दे बिकेम यूजर फ्रेंडली, अब सब्सक्राइब करना पड़ता है, एंड देयर बिजनेस इज थ्राइविंग. इन 2013 Blockbuster went bankrupt, and the last movie that was sold at a Blockbuster store in Hawaii में, it was ironically named, आप guess कर सकते हो उसका नाम क्या था? It was named This Is the End. Ironically, This Is the End. What about Kodak? Have you heard about Kodak? वो negatives होते थे, negatives. हाँ, it was a photographic company, Kodak, and it pioneered in photography industry in 20th century. And in 1988 it had 145,000 workers, but it went bankrupt in 2012. अच्छा, की फैक्टर्स क्या थे इसके bankruptcy के पीछे?
its inability to innovate in the area of digital photography. एंड इसकी जगह किसने ली? इसकी जगह डिजिटल कैमरास ने ली. फिर they also went. What about MySpace? In 2000, MySpace was a leading social media application, and it was outclassed by Facebook very soon because Facebook introduced those features that were user friendly, and Facebook grew rapidly. And what about schools? I have in my memory, in my mind, I can just name you hundreds of schools that went bankrupt, जो बस खत्म ही हो गए या अभी आखिरी साल से चल रही है उनकी, बिकॉज दे डिड नॉट चेंज विद द चेंजिंग टाइम. आपकी विसिनिटी में भी, आपके जहन में बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जो 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 एक वक्त में बहुत उरूज पे थे, लेकिन जवाल आ गया. वजह क्या कि दे डिड नॉट चेंज. वो अभी भी या तो ब्लैक बोर्ड पे ही है या व्हाइट बोर्ड पे बस वो डिक्टेशन करते रहते हैं, ट्रांसलेशन मेथड यूज करते रहते हैं. दे हैवंट प्रोग्रेस्ड. Now, lastly, just a few more minutes. The biggest and the most profound change in the world is the change of one's own self. Inner change. Inner change is the one of the biggest changes. अपने अंदर का बदलाव सबसे बड़ी चेंज है दुनिया में. एंड अल्लामा इकबाल जब उन्होंने पयाम मशरिक लिखी अपने जिंदगी के आखिरी आयाम पे, जब वो उरूज पे थे अपनी पोइट्री के, देन ही रोट इन दैट, जानते हो पत्थर का नसीब क्यों नहीं बदलता? जानते हो पत्थर का नसीब क्यों नहीं बदलता? इसलिए नहीं बदलता क्योंकि पत्थर नहीं बदलता. पत्थर नहीं बदलता इसलिए पत्थर का नसीब नहीं बदलता. बट मैन्स डेस्टिनी कैन चेंज. apart of man's destiny can change. वो क्या है? इंसान बदलता है तो उसका नसीब बदलने लगता है. इंसान बदलता है तो उसका नसीब बदलने लगता है. So the statement इंसान बदलता है, तकदीर बदलती है, it means when some things change in a person, like last 2 minutes, knowledge. When your knowledge changes, when my knowledge changes, knowledge means ilm, आपका तकदीर बदलने लगता है. When my attitude changes, when my manners change, my रवैया जिसको हम बोलते हैं, my destiny, your fate starts changing. जब मेरा behavior change होता है, मेरा बर्ताव, destiny starts to change. When my perspective, my outlook towards the world change, जब मुझ में शऊर आता है, develop होता है conscience, तो मेरा और आपकी तकदीर चेंज होने लगती है. When these things change, the destiny of a person change. That's why all the prophets that were sent here in this world, 1,24,000 prophets, उन्होंने मेहनत किस पे की? इल्म पे मेहनत की, आदाब पे, बर्ताव पे, सोच पे, इन्हीं चीजों पे उन्होंने मेहनत की. सूफीज ने कैसे मेहनत की? सेंट्स ने कैसे मेहनत की? इन्हीं चीजों पे. Because they knew if these things change, they can lead to the change of the destiny of the entire humanity. And जो पार्ट हम चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल लक. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेस्टिनी, वेरिएबल लक एंड स्टैटिक लक. वेरिएबल लक मींस तकदीर मुअल्लक एंड स्टैटिक लक मींस तकदीर मुबरम. एंड व्हाट इज तकदीर मुअल्लक, व्हाट इज वेरिएबल लक? अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन है, इट्स द लक दैट चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन आवर इल्म, रवैया, बर्ताव, सोच एंड अदर थिंग्स. ये होता है वेरिएबल लक. लास्टली, दूसरा सोर्स चेंज का, ये तो पहला सोर्स है, सर्कमस्टेंसेस. जब हालात बदलते हैं कभी, तो हालात के बदलने से किसी इंसान की तकदीर बदलती भी है, बिगड़ती भी है. नंबर 3, सोबत, कंपेनियनशिप. व्हेन योर कंपेनियनशिप चेंज, इट गिव्स राइज टू द सच सर्कमस्टेंसेस जो आपकी तकदीर को बदलते हैं. इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर-रजुलु अला दीन खलीलिह. A man is upon the religion of his friend, of his khalil, close friend. जैसा वो होता है वैसे उसी का रंग इंसान पे चढ़ता है. तो we have to be very picky and choosy about our friend circle. और दुनिया के जो इस वक्त के जो बेस्ट लोग हैं ना, उनसे हमें अपना उठना बैठना रखना चाहिए. क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, $1 ट्रिलियन ये पॉइंट बोलने जा रहा हूं कि इंसान की तकदीर का, इंसान के नसीब का, इंसान की कामयाबी का कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह ने उस वक्त के बेस्ट लोगों में रखा होता है.
इस वक्त 2024 चल रहा है, जो इस वक्त कंटेम्पररी वर्ल्ड में आपके इर्द गिर्द बेस्ट लोग हैं, आपकी तकदीर का, आपके नसीब का, मेरे नसीब का, मेरी कामयाबी का कुछ ना कुछ हिस्सा उनके पास अल्लाह ने रखा होता है, बट वो तब मिलेगा जब मैं जाऊंगा उनके पास। इसलिए अल्लाह ने कहा था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजू में इस्तिराब नहीं। यू आर लाइक एन ओशन, लेकिन वो ओशन जो साइलेंट है, जिसमें कोई वेव्स ही नहीं चल रही है, तुगयानी ही नहीं है, इस्तिराब ही नहीं है, देयर इज नो कमोशन, नो डिस्टर्बेंस इन योर ओशन, वेव्स में कोई कमोशन ही नहीं है, तू साइलेंट पड़ा है, तेरे अंदर एक समंदर पड़ा है। इसलिए वो दुआ कर रहे थे, या अल्लाह खुदा तुझे किसी तूफान से आशना, तूफान मीन्स अ ग्रेट इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग लाइफ चेंजिंग मेंटर, ऐसा मुर्शिद, ऐसा गाइड, ऐसा टीचर कि जो इंसान की जिंदगी में तूफान बनकर आए, जो सोई हुई मौजू में इस्तिराब पैदा करने के लिए आए। इकबाल अलैहि रहमत दुआ करते, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना। दैट मीन्स इफ आई हैव नॉट बीन इंस्पायर्ड येट बाय एनीवन, दैट मीन्स मेरे नसीब में अभी ऐसा कोई बंदा नहीं आया है, तो मुझे, और नसीब वालों को ही मेंटर्स मिलते हैं। आई एम वेरी सॉरी, नसीब वालों को ही मेंटर्स मिलते हैं। एवरी मंथ, शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, every 1 month I spend almost 30% of my revenue in learning things, because मुझे पता है मुझ में क्या खामी है, मुझ में क्या ऐब है। I keep working on these things, लोगों के पीछे पढ़ता रहता हूँ। प्लीज बीक में मुझे कुछ सिखाइए, बीक में मुझे कुछ दीजिए। ट्रेनर्स फ्रॉम पाकिस्तान, it's not safe even to study from these countries, you know it, we had to take risk। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, वो कोई तूफान बन के आना चाहिए आपकी जिंदगी में, वो आएगा तो आपकी जिंदगी चेंज होगी। लास्ट थिंग, look, being a teacher is not enough in today's world। ये मैंने पहले ही कहा था। तो क्या बनना है? एक मिसाली टीचर बनना है। we have to be an ideal teacher, an inspiring teacher। अब आप बोलेंगे सर कैसे बोल रहे हैं? अल्लाह की कसम, इंस्पायरिंग टीचर बनना, इंस्पायरिंग शख्सियत बनना अल्लाह की हबीब की सुन्नत है। क्योंकि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के हबीब भी हमारे लिए नमूना है। वो नमूना बनकर आए, नमूना बनकर दिखलाया, और हमारे लिए भी उनका तरीका सुन्नत है। हमें भी अपने बच्चों के लिए नमूना ही बनना है, मिसाली टीचर बनना है। सिर्फ टीचर बनने से काम नहीं चलेगा। मिसाली टीचर कैसे बने हमारे नबी? जो उस वक्त की सोसाइटी थी, उसमें बेटी पैदा होना, बेटी की परवरिश को कर्ज, अल्लाह बचाए, लानत समझा जाता था, ऐब समझा जाता था। तो अल्लाह के नबी ने उसी में कहा, जो बेटी की परवरिश करेगा अल्लाह ने उसके लिए जन्नत रखा है, वो जन्नत में जाएगा। जिस बेटी को लानत समझा जाता था, उसको अब रहमत समझने लगे। दिस वॉज द इंस्पिरेशन, दिस वॉज द आइडियल टीचर, our Prophet Muhammad, peace be upon him. With these words, I welcome our guest, our trainer, Mr. Adil Ahanger. He is right now imparting his services, rendering his services in many institutions of J&K, and ये कोई डिस्टेंस क्लास में भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं अभी। He is training them also, and he has got wealth of experience. He has been in this business, in this industry for I guess more than 1 decade, for 14 years now. So without taking much of your time, अगर आपको किसी को भी मेरी बात से कोई इज़ा पहुंची हो, कोई तकलीफ पहुंची हो, मैं माफी चाहता हूँ। With these words, I welcome Mr. Adil Ashraf. Please take over, sir.